A very good morning to everyone. Welcome back to my channel, which is Teacher Cool, and we are again with you with our next lecture. In the previous lectures we completed the Joule-Thomson effect and porous plug experiments. So let's move forward. In today's lecture we'll try to finish the first unit of our syllabus, and with this we'll move on to a very important topic which is also requested by one of the students. And let's start now. So we'll start with Joule-Thomson effect. In the previous lecture, I'll just write the name. This is Joule-Thomson effect. So in the previous lecture we did what is Joule's free expansion experiment, in which Joule allowed a gas under no pressure, under no particular conditions or specifications laid, and the gas was allowed to expand freely, and he noted down its temperature before expansion and after expansion. But he could not find any you can say very database readings. There were not much of a difference in the temperatures. So he said my experiment was crude, that is why I failed, and now I'll try it again. And then Kelvin came together and they did Joule-Kelvin porous plug experiment. So in the porous plug experiment or in the Joule's free expansion experiment, what we did was we allowed a free gas to expand. कोई भी एक free gas हमने उसे V1 से V2 पे expand कराया from the pressure P1 to P2, right? जो पहला हमारा फ्री एक्सपेंशन वाला एक्सपेरिमेंट था उसमें तो कोई पर्टिकुलर रीडिंग्स नहीं थी, लेकिन जो पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट था, so we used the pistons, we controlled the pressure and we allowed the gas to expand and we noted down the temperatures. वो एक्सपेरिमेंट हमने करा था, तो उसके बेसिस पे हमने बोला कि V1 वॉल्यूम थी उसकी जब वो P1 पे थी, then it expanded and it went to V2 जिसका प्रेशर P2 था. So with these observations we'll say that when a free gas is allowed to expand from V1 to V2 and the pressures P1 to P2, the gas is cooled, right? This cooling effect is my Joule-Thomson effect. मतलब जो एक्सपेरिमेंट हमने करा तो उसका जो एंड रिजल्ट आया कूलिंग इफेक्ट का, उस पूरे प्रोसीजर को विल कॉल इट जूल-थॉमसन इफेक्ट. क्यों? क्योंकि जूल-थॉमसन ने उसे परफॉर्म किया था. अब व्हाट इज द डिफरेंस इफ आई आस्क बिटवीन जूल-थॉमसन इफेक्ट एंड जूल फ्री एक्सपेंशन एक्सपेरिमेंट, राइट? वी हैव टू नाउ. पोरस प्लग वाला एक्सपेरिमेंट है और एक हमारा फ्री एक्सपेंशन वाला एक्सपेरिमेंट है. तो अगर समवन आस्क मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस के बेसिस पे अगर हम देखें, जूल फ्री एक्सपेंशन एंड जूल-थॉमसन पोरस प्लग वाला एक्सपेरिमेंट. So the first point will be, in free expansion case my system is thermally insulated, मतलब no exchange of heat was observed during this experiment, so we said delta Q was 0. Even in the porous plug experiment we did the same thing. My system was also thermally insulated and my delta Q was 0. So this is you can say the similarity, but the major difference जो इन दोनों के बीच में आया था वो आया when I go to second point, which is जो फ्री एक्सपेंशन एक्सपेरिमेंट था वो मैकेनिकली भी इंसुलेटेड था.
मैकेनिकली इंसुलेटेड, मतलब देयर वॉज नो वर्क डन बाय द गैस और ऑन द गैस, मतलब डेल्टा W भी 0 था। बट जो पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट था उसमें पिस्टन की पावर हमने अपने पास रखी थी टू मेंटेन द प्रेशर्स, मतलब जब प्रेशर्स को वेरी किया तो सम अमाउंट ऑफ वर्क वाज डन ऑन द गैस एंड ऑल्सो बाय द गैस। सो यहाँ पे हम बोलेंगे माई सिस्टम वॉज नॉट मैकेनिकली इंसुलेटेड, डेल्टा W वॉज नॉट इक्वल टू 0। अगर नॉट इक्वल टू 0 था तो कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ? ना, वर्क डन इज ऑलवेज गिवन एज PdV, change in volume into pressure. So in this case we'll say my delta W will be P2V2, the product of final pressure and volumes, minus the product of initial pressure and volumes, right? So इस केस में वर्क डन ना तो गैस ने किया था ना गैस के ऊपर किया गया था। उस केस में देयर वाज सम अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द गैस ड्यूरिंग इट्स एक्सपेंशन थ्रू द पोरस प्लग। सो नाउ इफ वी रिकॉल, जो हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स किया था, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का हमारा जो मैथमेटिकल फॉर्म निकल के आया था, इट वाज dW और डेल्टा W इज इक्वल्स टू डेल्टा Q plus delta W. This was my first law, right? अब it said कि अगर मेरी गैस के अंदर वर्क डन हो रहा है एंड हीट एक्सचेंज हो रही है तो देयर विल बी अ चेंज इन द इंटरनल एनर्जी एज अ रिजल्ट ऑफ दीज टू चेंजेस। इन दोनों में अगर हम देखें, अब इसी चीज़ को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। फ्री एक्सपेंशन के केस में मेरी इक्वेशन क्या बनेगी? इट विल बी डेल्टा U विल बी इक्वल्स टू डेल्टा Q विच इज 0 प्लस डेल्टा W विच इज ऑल्सो 0, सो आई गेट डेल्टा U इज 0. So in the Joule's free expansion experiment, the change in internal energy was also 0. But in this case, in the porous plug experiment, delta U will be equals to delta Q, which is 0, but delta W is now not equal to 0. So my delta W will be equals to P2 V2 minus P1 V1. क्लियर है? What we did is हमने जूल थॉमसन इफेक्ट बताया एंड वी कंपेयर्ड द जूल्स फ्री एक्सपेंशन एक्सपेरिमेंट विद जूल थॉमसन का पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट कि उन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। फर्स्ट इज अ सिमिलैरिटी, सेकेंड इज अ डिफरेंस, एंड ड्यू टू दीज टू जो हमारा एंड रिजल्ट है वो भी डिफरेंट आएगा। सो दिस इज द मेजर डिस्टिंक्शन जो हम बोलते हैं इन दोनों एक्सपेरिमेंट्स के बीच में रहती है। Right? I hope it is clear to all of you.